Hello everyone, before starting video, please subscribe and share my channel। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आप लोगों को नए वीडियो और नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट। My topic है terminating and non-terminating decimal representation। Every rational number can be represented two types. First is a terminating decimal and second is a non-terminating decimals presentation। Now start terminating decimals। If division process comes to end after some steps, then the decimal obtained is termed as terminating decimal। That means division process end after some step। कुछ स्टेप्स के बाद डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे टर्म को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नाउ टेक सम एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट। 0.25 is a terminating decimal because it is end point is 5। end point is 5। Similarly 0.4 0.375 minus 0.4 is a terminating decimal। Terminating decimal comes after end of number of steps of long division। लंबे डिवीजन के बाद इसका एंड हो जाता है, समापन हो जाता है। ऐसे डेसिमल पॉइंट को टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। इफ डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू infinitely and zero remainder is never obtained, then such a decimal is called non-terminating। That means ऐसे डेसिमल पॉइंट जिनका समापन नहीं होता है और जिसमें रिमाइंडर कभी भी जीरो प्राप्त नहीं होता है, उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। such as 0.555 so on। that means 0.555 so on। it is not end point here given।
Next point 0.3333 3 3 3 3 3. These type of rational number can be represented by putting bar on repeated part. This type डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, उनके ऊपर बार लगाकर। हियर वन लाइन इज नोन एज बार। .3333 is equal to 3 bar. Similarly, 145 this is a repeated, this is written as bar point .145. 0.177, here 7 is repeated or non-terminating terms, so 7 is written .17, here 7 is a bar point. Here only 7 is a bar point or repeating point. How to express in decimal form, कैसे इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फाइव बाई 3 is equal to 1.66 is equal to 1.6 bar. Here 6 is repeated term, then written 1.6 bar. Note, if the denominator of a rational number has no other prime factor except 2 or 5, then it is capable of being represented as terminating decimal only. That means कैसे हम किसी रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे कि वह रिपीटिंग टर्म है या नॉन रिपीटिंग टर्म, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यदि किसी भी रेशनल नंबर में के डिनोमिनेटर में 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो ऐसे रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट कह सकते हैं। टेक सम एग्जांपल टू क्लियर इट। Our first example is 8 by 25. The factor of
8/25 denominator is 25, then factor is 25 is equal to 5 into 5. Here denominator factor only 5, then it is called terminating decimal. Only prime factor of 25 is 5, so 8/25 must have terminating decimal point. इससे हम क्या terminating decimal point कह सकते हैं, केवल इसमें 5 का फैक्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल, second example, in 35/48 the factor of denominator 48 is equal to 2 multiplied by 2, 2 and 2, 3. Here the factor of 45 is 2 and 3. Hence 35/48 will not have terminating decimal point. यहाँ पर 48 का फैक्टर 2 के अलावा 3 भी है, 2 के अलावा 3 भी है, बट हमारे नोट पॉइंट में था 2 और 5, 2 होना चाहिए फैक्टर में या तो 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 और 3 फैक्टर दे दिया है, 3 नहीं होता तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट होता, बट यहाँ पे 3 है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट होगा। will not have terminating decimal point, that means non terminating point or repeated decimal. Our next topic is conversion of decimal number into rational number in form of a, b. We can change a rational number into decimal number. Similarly, we can change the decimal into rational number. First rule, put under the decimal point in the denominator and annex as many zeros as the number of for the decimal point, then remove the decimal point and put the number in simplest digit after the decimal point form. That means go to next page. Take some example to clear it. First example is a 0.4, that means डेसिमल पॉइंट के सामने हम क्या लिखेंगे 1 एंड अदर नॉन जीरो के सामने 0 लिखेंगे। देन 4.4 इक्वल टू 4/10,
Similarly, पॉइंट के सामने हम 1 लिखेंगे, पुट द 1 एंड नॉन जीरो नंबर्स के सामने हम 0 लिखेंगे। पॉइंट के सामने 1 लिखेंगे, नॉन जीरो नंबर से के सामने हम 0 लिखेंगे। दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ here, this is expressed here and this is expressed here. In simplest form is 35 by 8. Simplest form 35 by 8. Our next topic is pure recurring function. A decimal in which all the figure after the decimal point are repeated is known as a pure recurring decimal. That means decimal point के बाद here 3 and 1 which is repeated part, because here bar is represented. ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटेड होते हैं या बार में लिखे होते हैं, उन्हें सभी डेसिमल पॉइंट बार में या रिपीटेड पार्ट होते हैं, ऐसे पार्ट को प्योर रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नेक्स्ट, मिक्स डेसिमल, मिक्स रिकरिंग डेसिमल, a decimal in which at least one figure after the decimal point is not repeated, then some figures are repeated is known as mixed recurring decimal. That means ऐसे डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ फिगर रिपीट नहीं करते हैं। Here 2 is a not repeated part, but 6 is a repeated part because it is shown with a bar. Similarly, 0.1235, 0.1235. Here 1 2 is a non-repeated term and 3 5 is a repeated term because it is shown with a bar. Next point, 0.17. Here 7 is a repeated part, 1 is a non-repeated part. This is after the decimal point. Then these points are known as mixed recurring function, mixed recurring decimal, mixed recurring Go to next page.
Example: convert the given decimal into vulgar function. That means first example is 0.7 bar. Now solve it. Let x is equal to 0.777, 7 बार को एक्सप्रेस कर दिया गया है यहाँ पे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाई both side, we get 10x is equal to 7.777. This is equation number 2. Now subtract 1 from 2. एक को 2 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. देन वी गेट x minus x is equal to 9x. 10x minus x is equal to 9x, which is here. Similarly, 7.777 minus 0.777, then we get 7.00, which is represented here. Now transfer the 9 in other side, then x is equal to 7 by 9. X is equal to 7 by 9. It is a decimal or rational number. It is a decimal rational number. X is equal to 0.7 bar equal to rational number can be represented 7 by 9. Second example is B. Let x is equal to 0.45. Here 45 is repeated part. Then equal to 0.454545, so on. This is equation number 1. Now multiplied by here, multiplied by multiplied by 100, both side. Then we get 100x equal to 454545. यहाँ पर 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि आफ्टर द डेसिमल 2 नॉन जीरो रिपीटिंग पार्ट,
जितने जीरो रिपीटिंग पार्ट होते हैं उतने जीरो वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ सबट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 99x इक्वल टू 45 है। देन ट्रांसफर द 99x x इक्वल टू 45 बाई 99, it is a rational number। Hence we can say x equal to 0.45 decimal point converted into rational number is 45 by 99। Next point, next example, see, let x equal to 0.345, that can be written 0.345 0.345 0.345। Then here after the decimal 3 term, then multiplied by both side in 1000। यहाँ पे 3 टर्म दिए हुए हैं, इसलिए 3 जीरोज और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 1000 x इक्वल टू 345। This is equation number 2, this is equation number 1. Now subtract equation 2 से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट 99x इक्वल टू 345। ट्रांसफर द मल्टीप्लिकेशन पार्ट ऑफ x in here, then x equal to 34599। this is a rational number। here we learn how to change any repeating part into this rational number। Our next topic, rule to pure recurring decimal into vulgar numbers, write the repeated figure only once the numerator and put as many 9 in the denominator as the number of repeated digit। that means finally here 3 term, then denominator written is 999।
if any repeated decimal number 0.28, this is repeated part, then directly how to convert in rational number to 8 written here two numbers, then write 9 to 9 in denominator. If 1 5 2 3, here is a 4 term after the decimal point, then directly how to written in rational number, then written 5 2 3, here 4 non-zero term, then in denominator write 4 times 9 9 and 9. Go to next page. Example, convert the vulgar function convert into vulgar fraction a 0.1 bar is equal to 19, 0.3599, here 3 term, then written is 39, here 2 term, then written is denominator 29, here 1 term, then written is a denominator 19. So we can say after the decimal point how many non-zero term, then written equal 9 in denominator of rational number. Next, recurring decimal to rational form converting mix. How to convert mix recurring function into rational form. First example is 0.26 bar. Second is 0.1235. Now solve first question. Here 6 is a repeating part and 2 is a non-repeating part. 8 is a mix-up of repeating and non-repeating, so it is a non-mixed recurring function. Now written is express form 0.2666. 6 is the repeating part, then 2 is non-repeating, 6 is repeating, then 6 is repeat so many times. This is equation number first. Let equal to x, then written such as now multiplied by both sides 10 multiplied by 10, then we get 10x equal to 2.666. This is equation number second. Now again multiplied by 100
multiplied by 100 both side, then we get equation number third. Then we get equation number third. Now subtract the equation 2 from 3. 2 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, then we get 100 minus 10 x is equal to 90x. हंड्रेड में 10 को घटाएंगे 10 को तो 90 होगा। Then 26 minus 2, 26 this point, 2 is this point, then we get 24. That means 26.666 26.666 and 6 2.666 and 6, then we get 24, which is written here. Which is written here. Go to next page. Now transfer the 90, then we get x is equal to 24 by 90. Hence we can the mixed fraction 0.26 converted into rational number is equal to 24 by 90. This is the answer. Similarly, convert the next example. Here second example is 2 repeating term and 2 non-repeating term. Then let x is equal to 0.12353535. Hundred equal to 1.2.3555 multiplied by equation number 100. Both side multiplied by 100, then we get 100x. Similarly, multiplied by equation number first 10,000. यहाँ पे 10,000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है। देन मल्टीप्लाइड बाई 4 zeros,
then we get equation number 3. Now subtract from equation 3 equation number 2, then we get 9900 x equal to 1 2 2 3, then we get 1 2 2 3 by 9900. Our next topic is by using the decimal any number of rational numbers between two given rational number. किसी दिए हुए रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड 5 रेशनल नंबर between 1/3 and 3/4. Then we can write 1/3 3 को 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, then we get 0.03 टर्म 9 1 3 9 1 so on. Then we see 1.3 is equal to 0.33. Similarly 3/4 is written 3 divided by 4 3.04 से बन जा 28 2 4 5 जा 20. Then we get 3/4 is equal to 0.75. Clearly we have 0.33, 0.34, 0.35, 0.36. Here 0.34, 0.35, 0.36 is between 0.33 and 0.7. So we can choose any 5 rational number from the above answer. Go to next topic. How to change our next topic. How to change decimal number into rational number. 0.34 here decimal point के सामने in front में 1 लिखेंगे, अदर numbers के सामने 0 लिखेंगे. Then we change the decimal point into rational number is 34/100. Similarly this